Hello everyone, a very good evening to all of you. So guys, please let me know if I'm audible to all of you. So please let me know if I'm audible to all of you. Okay. If there's any kind of issue, please let me know in the audio or maybe in video. Okay. Hi Akshay, Jai Hind. A very Jai Hind to you and very good evening to you. Hi Jax Production, thank you so much for confirming. Okay, I'll surely start now. Okay. All right. So, very good evening to everyone. I welcome you all to my live session today. So, today we are going to do questions based on sentence improvement, right? And the level of questions would be difficult here. So, sentence improvement के questions करेंगे, difficult level के questions रहेंगे. ठीक है, तो चलिए पहला question यहाँ पर शुरू करते हैं. ठीक है, आपको पता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या करना होता है. यहाँ पर आपके पास जो क्या है, एम्बोल्डन पार्ट है. ठीक है, इसको आपको देखना है whether it is grammatically correct or not. ठीक है. Now today we will be mainly doing questions based on vocab part. ठीक है, जो vocabulary है थोड़ा सा grammar भी based होगा but mainly vocabulary portion हम करेंगे. ठीक है, चलिए. तो it says after multiple efforts by leaders beside the Indian political referendum, a long-term visa scheme was established. The Overseas Citizenship of India, commonly referred to as the OCI card, the name is itself misleading as it doesn't offer Indian citizenship. Okay, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखो, आफ्टर मल्टीपल एफर्ट्स बाय लीडर्स. ठीक है, लीडर्स के मल्टीपल एफर्ट्स के बाद, है ना, बाद भी क्या है, बिसाइड द इंडियन पॉलिटिकल इरोटम. कहा है आपको देखना है, बिसाइड. बिसाइड का मतलब क्या होता है ना, बिसाइड. ठीक है, अगर आप देखेंगे ऑप्शन में आपके पास इन है, आपके पास अक्रॉस है और आपके पास अमंग भी है. Then you have the Indian political erratum. What is erratum? Political के साथ आपका लगा है, जो word आपका लगा है, that is what erratum. What is erratum? What erratum could be? See, erratum is any mistakes, right? Any mistake during printing or typing. ठीक है, printing और typing, वो आपका क्या होता है, इरोटम. ठीक है, इसका जो प्लूरल फॉर्म रहेगा वो क्या रहेगा, इरोटा. ठीक है, इरोटम है, इरोटा. सो पॉलिटिकल इरोटम, सेम पॉलिटिकल इरोटम डजंट मेक अ सेंस एट ऑल, है ना. पॉलिटिकल इरोटम क्या कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल, बिकॉज इरोटम मींस मोर व्हाट, एनी लाइक प्रिंट, लाइक मिस्टेक ड्यूरिंग प्रिंटिंग और टाइपिंग. तो पॉलिटिकल के साथ ये वर्ड क्या होगा, ठीक है, इट विल नॉट बी दैट करेक्ट. हाई यूजर. Okay, so user is saying it should be B, that is across the Indian political spectrum. Yeah, right, very good, because this is only it makes sense, है ना. देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो political के साथ हमें देखना है कौन सा वर्ड यहाँ पर बेहतर फिट होगा. See, erratum doesn't make a sense, है ना, with political, right, and nor does strata makes any sense with it. What is strata? Strata हो गया plural. See, these are all Latin words. Okay, ये Latin से आए हुए आपके शब्द है. ठीक है, स्ट्रेटा का क्या हो जाएगा, सिंगुलर स्ट्रेटम, राइट. एंड व्हाट इज स्ट्रेटा और स्ट्रेटम, दीज आर क्लासेस. क्लासेस, है ना. फॉर एग्जांपल रिच स्ट्रेटम और, है ना, पुअर स्ट्रेटम, राइट, या मिडिल क्लास. ठीक है, अलग अलग बेसिकली जो सोसाइटी के क्या है, क्लासेस इन सोसाइटीज हम कह सकते हैं, राइट, क्लासेस इन सोसाइटी. सो हियर बिसाइड द इंडियन, and then we have plectrum. What is plectrum? Plectrum is a tool, right, through which you actually play your guitar.
तो आपने देखा होगा इस तरीके का वो कुछ होता है, ठीक है। एक गिटार को प्ले करने का एक क्या होता है, टूल होता है, दैट इज व्हाट प्लेक्ट्रम इज। सो प्लेक्ट्रम डजंट मेक अ सेंस, स्ट्रेटा डजंट मेक अ सेंस एंड एरोटम डजंट मेक अ सेंस। आपका जो बचा है वो क्या है, स्पेक्ट्रम। नाउ व्हाट स्पेक्ट्रम मींस, स्पेक्ट्रम मींस एन एरिया बेसिकली, है ना। आप कह सकते हैं एरे, एरिया और फील्ड, right? Spectrum. Political spectrum. Now it makes a sense. So saying political spectrum means political area or political field, right? And then we have what? Beside the Indian political है ना spectrum. So beside doesn't make a sense here. यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, across. जो आपका preposition across है ना, across क्या है? Across मतलब है जो cover करता है पूरे चीज को, है ना। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जितना भी पूरा इंडिया की जो क्या है, भारत की जो राजनीति है, भारत का जो राजनीतिक क्षेत्र है, उसको पूरा कवर करा है। तो अक्रॉस यानी पूरा जो क्या है, इंडियन का जो इंडियन पॉलिटिकल जो सिस्टम है, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। सो इट शुड बी अक्रॉस द इंडियन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, ओके। इन, ठीक है, और इन जो है, इन कहां से, इन इंटरनली लोकेट करने के लिए एक प्रपोजिशन होता है, ठीक है। अमंग भी ऑलमोस्ट इनका ही एक सेंस देता है, यूजुअली मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन के सेंस में, ठीक है। तो यहां पर आप करेंगे अक्रॉस, तो आपका आंसर होना चाहिए ओनली बी। सो यस यूजर, यू आर करेक्ट, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पर आज नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डूइंग ओनली फ्यू क्वेश्चंस टुडे, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। चलिए, so you have the next question on your screen. It says the card is available to certain overseas ex-Indians, and while it affords holders residency and other rights, it does have restrictions and is not considered to be any type of Indian citizenship from a constitutional perspective. From a constitutional perspective. From a constitutional perspective, yes. So बताएंगे जो कार्ड है ना, it is available to certain overseas ex-Indians. I mean that means Indians who are actually previously who were Indians, now they have obtained citizenships of other countries and now they are living abroad. Okay, and while it affords holders residency and other rights, जबकि वो क्या है, जो होल्डर को क्या करता है ना, while it affords holders residency and other rights, so basically it may provide the person with like residency and other rights, but it does have some restrictions, और इसको क्या नहीं माना जाएगा, इससे any type of Indian citizenship नहीं माना जाएगा from a constitutional perspective. That means it may give certain rights, but it may not consider you basically a citizen, right? So user says option 5, that is no correction required. Okay, let's see. So the first is from a comprehensive. Okay, let's see. First of all, what's written in the question already. From a constitutional perspective, from a constitutional यानी संवैधानिक, है ना, और perspective मतलब basically क्या है, आपका जो एक view है। तो basically हम यहाँ पर कह रहे हैं कि संवैधानिक रूप से, संवैधानिक नजरिए से, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू से, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू पॉइंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से, ठीक है, इट इज नॉट एनी टाइप ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो यहां तक तो सेंस बना रहा है, ठीक है। इट सीम्स लाइक वी डोंट नीड रियली इंप्रूवमेंट हियर, बट लेट्स चेक द ऑप्शन फ्रॉम अ कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो। व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव? कॉम्प्रिहेंसिव मींस यू कैन से लाइक होलिस्टिक, है ना, होलिस्टिक, ठीक है, कंप्लीट, राइट, complete, and then the next you have this portfolio. Now what is portfolio? Portfolio, आपने मॉडल्स को देखा है, मॉडल्स को, ठीक है, जब वो लोग कहीं like एम्प्लॉयमेंट के लिए वो अप्लाई करते हैं, तो दे हैव ये सर्टेन लाइक सेट ऑफ फोटोज, ठीक है, सेट ऑफ लाइक पिक्चर्स दैट दे हैव कलेक्टेड। तो एक पोर्टफोलियो आप उसे कहते हैं, बोलते हैं ना कि ठीक है मैंने एक बहुत अच्छा अपना पोर्टफोलियो बनाया है। दूसरा एक पोर्टफोलियो हो सकता है जितनी भी जो पार्लियामेंट्स में क्या है पोजीशंस होती है ना एमपीज की, ठीक है, तो उनके जितने भी जो पोजीशंस है, रूल्स है, उनको भी आप पोर्टफोलियो करते हैं। या पोर्टफोलियो कैन आल्सो भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस जो भी वो प्रोडक्ट्स क्या है प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो पोर्टफोलियो आप उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो डजंट मेक अ सेंस एट ऑल। देन द नेक्स्ट दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन इज फ्रॉम अ कंटेंशियस प्यूरिफिकेशन। व्हाट इज प्यूरिफिकेशन? प्यूरिफिकेशन इज cleaning basically, है ना, to make something like to sanctify something, right, साफ करना। contentious is what? contentious would be again यहाँ पर देखिए एक और उसका synonym लिखा है, that would be pugnacious in nature,
पगनेशियस है ना, यानी डिसएग्री है ना, आप कह सकते हैं डिसएग्री, आप कह सकते हैं, ठीक है, डिसएग्री, pugnacious or disagree. So something that's basically is a cause of disagreement, है ना, contentious, right? Purification, झगड़ा होता है, ठीक है. And then we have what from a contentious pugnacity. So pugnacity is again, like disagreement or contention, है ना. Pugnacity basically it's a state where someone continues to disagree, continues to fall into altercations, right? And then we have contemptuous. Contemptuous comes from contempt. तो बेसिकली मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल, है ना, रिडिक्यूल. तो इसका यहाँ पर सेंस नहीं बनता है किसी भी ऑप्शन का. सो यस, जो सेंटेंस में लिखा है वही बिल्कुल सही है. सो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, डोंट नीड एनी करेक्शन हियर. ओके, कम. ओके, लेट्स सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. या यूजर है ना, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज ऑल्सो one portfolio. Next is on 9th January 2015, the person of Indian origin card scheme was pulled in by the government of India and was merged with the overseas citizen of India card scheme. 9th January 2015 को क्या हुआ था? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम, जो स्कीम थी वो पुल्ड इन, इसे पुल्ड इन कर दिया गया गवर्नमेंट इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा. और किसमें मर्ज कर दिया गया? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड स्कीम में मर्ज कर दिया गया. ये आपके पास यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, दैट इज, है ना, you have a phrasal verb here which is what? Pulled in, pulled in, right? So then you have an option pulled. Okay, यहाँ पर tense थोड़ा सा change हुआ है, was pulled in. आपका जो यहाँ पर है ना, was pulled in, this is what? Was pulled in. ये आपका हो गया simple past, है ना, simple past. और अगर आप यहाँ पर देखेंगे had been pulled in, had been pulled in, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा past perfect, पैसिव वॉइस का पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना. और फिर आपका ये दोनों सिंपल पास्ट में है, ठीक है. ये वाला जो आपका हो गया पुल्ड आउट, फिर देन यू हैव पुल्ड अप, ठीक है. तो फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है. यूजर सेज इट शुड बी ओनली बी, दैट इज पुल्ड आउट, राइट? पुल्ड आउट. ओके, सो व्हाट इज पुल्ड आउट? पुल्ड आउट मींस विथड्रॉ, बेसिकली विथड्रॉल, है ना. When you withdraw your name or your participation from something, ठीक है, या आप किसी चीज को क्या करते हैं, बेसिकली abolish करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, हटा देते हैं, ठीक है, या उसे डिसफंक्शनिंग आप बना देते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट पुल्ड आउट, है ना, पुल्ड आउट. सो ठीक है. और पुल्ड अप का मतलब हो जाएगा क्या? पुल अप का मतलब हो जाएगा रिप्रिमेंड करना, है ना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, pull up. And then you have pull in. What pull in could mean? Pull in can mean to stop or come to a destination, right? Or it can also mean like parking your car, basically, na? Parking your car, parking a vehicle, right? Pull in. तो यहाँ पर जो सेंस आपका बनाएगा वो आपका क्या बनाएगा? पुल्ड अप, ठीक है. बिकॉज व्हाट इज इट सेइंग, देखिए मर्ज करने की यहाँ पर बात हो रही है ना, तो हम बेसिकली कह रहे हैं कि द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम, इसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया. इट वाज पुल्ड आउट, ठीक है. और ये मर्ज कर दिया गया किसमें? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड स्कीम में, ठीक है. तो यहाँ पर बेसिकली पुल आउट का मतलब है कि इट वाज टोटली विथड्रॉ, it was withdrawn and it was kind of annulled, है ना, यानी खत्म कर दिया गया, abolish कर दिया गया, ठीक है. और इसके साथ इसे merge कर दिया गया. तो आंसर would be what? That is only B. So yes, user, you are correct. You are correct, ठीक है. चलिए, let's move to next question now. So, next question says, a committee looking into the matter is at present in the midst of its liberalization. ये रहा आपका golden part, यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है. Here you need to see. Here you need to see.
liberalization, and is in the process of consulting stakeholders. The ministry said the committee has not yet reached any conclusion whatsoever. जो कमिटी है ना, जो कमिटी है जो मैटर में देख रही थी, राइट, इज इट प्रेजेंट इन द मिड्स ऑफ इस लिबरलाइजेशन? किसके बीच में वो है अभी, किस चीज में वो एंगेज्ड है? लिबरलाइजेशन में, एंड इज इन द प्रोसेस ऑफ कंसल्टिंग स्टेक होल्डर्स, और साथ साथ में वो स्टेक होल्डर्स को क्या कर रही है, कंसल्ट कर रही है। मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा, राइट। द कमिटी हैज नॉट येट रीच्ड एनी कंक्लूजन व्हाटसोएवर, और अभी तक कमिटी ने, ठीक है, कोई भी अभी तक कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। So the committee is in what actually at the moment, है ना? They are in the midst of liberalization. The committee members are in the midst of liberalization. तो liberalization का मतलब तो होता है आजादी, है ना, freedom, right, है ना? ठीक है, freedom। तो क्या होना चाहिए बताए? Yes, user. You have calibrations, कैलिब्रेशंस क्या हो गई, एक मिनट है, ठीक है। व्हाट इज कैलिब्रेशंस, है ना? कैलिब्रेशन देखिए आप अपने फोन में भी करते होंगे, पहले फोन में आता था, ठीक है, वो क्या करते थे, टच स्क्रीन फोन पे ना, उसमें क्या करते थे, और टच स्क्रीन कैलिब्रेट का एक ऑप्शन आता था, तो वहां पर ना स्क्रीन पर एक पॉइंटर आता था और उसको आपको अलग अलग जगह पर क्या करना होता था, टच करना होता था। दैट वाज बेसिकली टू कैलिब्रेट, है ना, द टच। सो कैलिब्रेशंस का मतलब होता है एडजस्टमेंट्स, ठीक है, एडजस्टमेंट या टू फिक्स समथिंग, है ना, ठीक है। Then you have fabrications. Fabrications क्या होगा? Fabrication होगा to basically you can say like to basically fabrication would be what? To make a set of lie, है ना? Make a set of lies, right? Okay, basically create a concoction. That is fabrication. हम कहते हैं इट्स ऑल फैब्रिकेशन, मतलब बेसिकली झूठ है, झूठ का एक नेटवर्क है। एंड देन फाइनली वी हैव डेलिब्रेशन। सो व्हाट विल बी डेलिब्रेशंस? डेलिब्रेशन वुड बी अ लॉन्ग टर्म व्हाट, लॉन्ग टर्म डिस्कशन, राइट, इन ऑर्डर टू कम टू ए कंक्लूजन, ठीक है, जो एक सोच विचार किया जाता है काफी लंबे समय तक। दैट इज व्हाट डेलिब्रेशन इज, ठीक है। तो यहां पर इन द मिड्स ऑफ लिबरलाइजेशन तो सेंस नहीं बनाएगा। They are looking into a matter, right? So perhaps they are going to think about it. They might be discussing about it. They want to come to a conclusion, ठीक है। तो यहाँ पर deliberations ही क्या करेगा, एक करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका होगा। Not calibration, ठीक है, ना ही आपका fabrication. That is only C, right? Yes, user. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। This option is still fatuously variant than moving to the old pension system, as employees continue to contribute and most of the pension is funded through market returns, the official said. This option is fatuously variant. What is variant? Variant means heroic, courageous, right? Fatuously is what? It means like foolish, right? Unscrupulous, okay? ज्यादा ध्यान ना देने वाला, केयरलेस, है ना, केयरलेस, राइट। सो दिस ऑप्शन इज स्टिल फैक्चुअसली वेरिएंट। तो क्या कोई सेंस बना रहा है क्या? इज इट मेकिंग एनी सेंस? यूजर सेज इट शुड बी ऑप्शन बी एंड सी, दैट इज फाइनेंशियली फिजिबल एंड फिजिकली वायबल। ओके, लेट्स सी। देखिए यहां पर ना हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक ऑप्शन के बारे में जिसे हम कह रहे हैं कि दिस फैक्चुअसली वेरिएंट। एक मूर्खतापूर्ण से क्या है, एक करेजियस ऐसा कुछ कहने की हम कोशिश कर रहे हैं। इट डजंट मेक अ सेंस एट ऑल। देन मूविंग टू द ओल्ड पेंशन सिस्टम, ठीक है, देन व्हाट, है ना, किसके कंपैरिजन में, ओल्ड पेंशन सिस्टम को मूव करने के लिए, मूव करने पर, है ना, इट इज वन ऑप्शन। तो कैसा ऑप्शन है? देखिए फिजिबली वर्चुअल, फिजिबली, है ना, फिजिबल यानी समथिंग दैट कैन वर्क एक्चुअली, दैट कैन वर्क आउट, है ना, ठीक है, जो काम कर सकता है, which is maybe practical to do, है ना, right, which is useful, okay. Then virtual, physically virtual, virtual क्या कहने की हम कोशिश कर रहे हैं, right?
डजंट मेक अ सेंस। यहां पर होगा आपका फाइनेंशियली फिजिबल, जो क्या है फाइनेंशियली यानी इकोनॉमिकली, है ना, फाइनेंशियली यानी इकोनॉमिकली, राइट, या like in terms of like monetary basis, राइट, वो क्या है फिजिबल है यानी इकोनॉमिकली वो काम कर सकता है। एंड सेम इज फिजिकली वाइबल, फाइनेंशियली अनदर वर्ड फॉर फाइनेंशियली इज फिजिकली। फिजिकल जो आपका फिजिकल फिजिकल डेफिसिट आपने सुना होगा, है ना, तो फिजिकल यहाँ पर इसका मतलब ही क्या है इकोनॉमिक या मॉनेटरी से रिलेटेड। एंड वाइबल इज अनदर वर्ड फॉर फिजिबल, ठीक है। वायबल हम कहते हैं ना कि इट इज वायबल, दैट मींस इट कैन वर्क, राइट। एंड फिजिबल बोलते हैं ना, इज इट फिजिबल फॉर यू टू कम टुमारो, है ना, मतलब क्या आपके लिए कंफर्टेबल है, कैन इट वर्क फॉर यू, राइट। सो फिजिबल वायबल, दैट मींस बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, ऑप्शन 3। Okay, let's move to next question now. Okay, so next question says the professor's apparent lecture left many students confused and struggling to grasp the concepts. प्रोफेसर के क्या apparent lecture, कैसे lecture, apparent lecture left many students confused and struggling to grasp the concepts. एक प्रोफेसर थे जिनके जो लेक्चर थे वो apparent थे, और उस वजह से हुआ क्या, उनके apparent लेक्चर की वजह से जो स्टूडेंट्स थे वो कंफ्यूज थे और वो कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। दैट मींस दे वर हैविंग हार्ड टाइम्स in order to grasp the concepts and trying to understand what the professor was teaching or explaining. So how the lecture needs to be, the lecture needs to be, जो word यहाँ पर आएगा ना वो होना चाहिए negative in sense, ना, वो होना चाहिए negative meaning word, negative meaning giving word, ठीक है। So this professor apparent lecture, देखिए apparent का मतलब होता है clear, है ना, as far as one can see, as far as it seems or one can see, है ना, apparent. So lecture cannot be clear, right? Lecture अगर clear होते तो जो students थे, है ना, वो confused नहीं रहते and they wouldn't have hard time to grasp the concept. तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर, देखो इनकॉम्प्रिहेंसिबल। व्हाट इनकॉम्प्रिहेंसिबल मीन्स, इनकॉम्प्रिहेंसिबल मीन्स समथिंग दैट कांट बी कॉम्प्रिहेंडेड, right, something that can't be comprehended or something that cannot be understood. Esoteric is what? Esoteric is something that can be understood by only a few section, ठीक है, not by people in general, है ना। मतलब मान लो जैसे क्या है, मैं यहाँ पर ना एक वर्ड जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा कैथारसिस, यानी कैथारसिस। नाउ व्हाट इज कैथारसिस, कैथारसिस, ठीक है, उनको समझ में आएगा जो क्या है साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उनके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होंगे ना उनको शायद ही समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं कोई भी मेडिकल फील्ड का कोई भी मैं क्या करूं एक वर्ड लूं और आपके सामने बोलूं, ठीक है, तो आपको नहीं समझ में आएगा लेकिन उनको समझ में आएगा जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। तो एसोटेरिक इज अ वर्ड व्हिच मींस एक ऐसा कोई चीज जो एक पर्टिकुलर एक लिमिटेड सेक्शन को ही समझ में आएगा, राइट। व्हाई, बिकॉज उसका जो इंप्लीकेशन है वो पर्टिकुलर फील्ड्स की तरफ है, ठीक है। तो दैट इज एसोटेरिक, है ना। हम कह सकते हैं कि हिज लैंग्वेज इज एसोटेरिक, मतलब बहुत कम ही लोगों को समझ में आती है जो पर्टिकुलर उस फील्ड से हैं। देन व्हाट इज एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस मींस समथिंग दैट इज डिफिकल्ट, right? For example, I say it is an abstruse question, right? His word was abstruse in nature, right? Yes, user. Okay, so the answer should be here is, see, incomprehensible also means something that is difficult to understand. Esoteric also means that can be understood only by certain people, and then abstruse means something that is difficult. So all the three make sense here. Okay, so answer should be all of the above, right? All of the above. Let's now move to next question. 7. The artist's latest masterpiece is a cacophony of creativity and innovation. Right?
The artist's latest masterpiece is a cacophony of creativity and innovation. What is cacophony? Cacophony is a discordant music, right? A discordant music. मतलब बिल्कुल एक बिना सुर का गाना, ठीक है। मान लो मैं गिटार बजा रहा हूँ, मुझे गिटार बजाना नहीं आता, बस मैं कोई से भी सुर बजा रहा हूँ, कोई से भी मैं उसमें जो वायर्स होती है ना वो हिला रहा हूँ, ठीक है। सो दैट वुड बी कॉल्ड cacophony. So if you call something cacophonous, right, it means something which is discordant in nature, right? That is what that has dissonance, right? Dissonance is another word, है ना? ठीक है, discord यानी जो चीज मैच नहीं करती, discord, right, which doesn't match, okay, discord. So cacophony. तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन का cacophony हो सकती है क्या? नो, cacophony यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड है ना। हमें चाहिए क्या? एक पॉजिटिव गिविंग, है ना, एक पॉजिटिव गिविंग मीनिंग, पॉजिटिव मीनिंग गिविंग वर्ड, सो पॉजिटिव, है ना। तो यहां पर हम देखेंगे व्हाट इज मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस, बी इज करेक्ट फॉर श्योर, ओके। दैट इज मास्टर स्ट्रोक, है ना। मास्टर स्ट्रोक यानी जब आप बहुत ऐसा कुछ कार्य करते हैं, बेसिकली आपने कुछ मतलब स्ट्राइक आपने मार ली, है ना, आपने किसी चीज को स्ट्राइक कर लिया, मतलब बेसिकली आपने क्या कर लिया, अपना मार्क आपने कर लिया उस चीज को, दैट इज व्हाट मास्टर स्ट्रोक, है ना। मैंने बहुत ऐसा ऐसा काम कर लिया जो क्या है सबके ऊपर है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट लाइक पीसेस आई एवर डिड, right? So that is master stroke. What would be magnum opus and what would be tour de force? Right? Magnum opus and tour de force both means what? Both means such work, right? जो क्या होगा, जो जो ये दोनों वर्ड्स है ना, टूर दे फोर्स एंड मैग्नम, मैग्नम ओपस, राइट। सो ऑल द मीन्स, ये सबसे पहले तो पॉजिटिव गिविंग वर्ड्स हैं, ठीक है। और इनका जो मीनिंग है, इनका मीनिंग क्या हो जाएगा, कोई भी एक ऐसा परफॉर्मेंस है ना विच इज बेस्ट, मैग्नम ओपस, मैग्निफिसेंट, है ना, ठीक है। टूर दे फोर्स, ठीक है, काइंड ऑफ फोर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो यहां पर जैसे तोड़ दे फोर्स है, ठीक है, ये हो जाएगा एक ऐसा हम कह सकते हैं कि एक ऐसा व्हाट, एक ऐसा परफॉर्मेंस जो जहां पर किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, आफ्टर a lot of हम कह सकते हैं difficulties maybe or after a lot of efforts. Magnum opus is also a person, right, who has done very well in his certain like maybe like art, है ना, जैसे लिटरेचर के फील्ड में या हो सकता है कोई भी क्रिएटिविटी के फील्ड में। बट ये दोनों देखो, पॉजिटिव तो ये तीनों वर्ड्स हैं आपके, बट दिस मैग्नम ओपस रिफर्स टू अ पर्सन, है ना, ठीक है, एंड टूर द ओर्स वुड आल्सो बी, इट विल बी रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, ठीक है। आपका जो क्या है, तोड़ दे फोर्स है ना। तो अगर हम कहें मास्टर स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो मास्टर स्ट्रोक तो यहां पर आ सकता है, ठीक है, मास्टर स्ट्रोक ऑफ क्रिएटिविटी। एंड अगर हम बात करें तोड़ दे फोर्स की, तो तोड़ दे फोर्स की भी आ सकता है कि इट्स अ तोड़ दे फोर्स ऑफ क्रिएटिविटी, दैट मींस अ परफॉर्मेंस ऑफ क्रिएटिविटी, एंड देन मैग्नम ओपस, ठीक है, यानी कैसा वर्क जो बहुत ही अच्छा जिसमें किसी ने परफॉर्म किया है। तो ये नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया और ये भी नाउन हो गया। तो यहां पर तीनों आपके आ सकते हैं बिकॉज दीज आर पॉजिटिव गिविंग पॉजिटिव मीन वर्ड्स, ठीक है। तो यानी कहा गया ऑल ऑफ दी अबव। So the artist's latest masterpiece is a magnum opus of creativity. The artist's latest masterpiece is a masterstroke of creativity, and then the artist's latest masterpiece is a tour de force of creativity and innovation. ठीक है, चलिए नेक्स्ट। The negotiations reached a bedrock with neither party willing to compromise on their demands. Yes, the negotiations reached a bedrock
with neither party willing to compromise on their demands. Yes, पता है. Yes, user. जो नेगोशिएशन है वो कहां पर पहुंचा, एक बेडरॉक पर पहुंचा. बेडरॉक. दोनों पार्टी क्या थी, दोनों पार्टी में से कोई भी विल नहीं कर रही थी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर डिमांड्स. Okay, user says A or B, that is stalemate and deadlock, but not impasse. But not impasse. Impasse would be, I guess. ना? देखो bedrock क्या होता है? Bedrock means foundation, right? तो किसी भी चीज का जो एक फाउंडेशन होता है बेडरॉक होता है. जैसे मैं कह लूं कि कोई भी एक जैसे मैं कहूं कि स्टूडेंट्स आर अ बेडरॉक ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या है, एक फाउंडेशन है. उन्हीं पर बेसिकली जो पूरा का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो खड़ा है ना. सो इसको हम कह सकते हैं बेडरॉक. नाउ जो नेगोशिएशन है वो कहां पर पहुंचा, अपने फाउंडेशन पर पहुंचा, जहां पर कोई भी पार्टी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थी, ऐसा हम नहीं कह सकते. ठीक है. स्टेलमेट हम कहेंगे, डेडलॉक हम कहेंगे, और इम्पासिव भी हम कहेंगे. राइट. व्हाट इज स्टेलमेट? देखिए स्टेलमेट आपका चेस में जैसा होता है. चेस में एक स्पेसिफिक एक स्टेट होती है जहां पर बेसिकली चारों तरफ से आप घिर जाता है. आप चेक की स्टेट में नहीं है. ठीक है, आपने खेला होगा चेस अगर तो. ठीक है. सो दैट इज व्हाट स्टेलमेट इज, है ना. यू आर नॉट इन द पोजीशन ऑफ चेक, बट क्या है, आपके पास और कोई क्या है, तरीका नहीं है, और कोई चारा नहीं है इधर उधर मूव करने का. सो स्टेलमेट एक ऐसी पोजीशन हो गई बेसिकली जैसे आगे, है ना, हम बोलते हैं ना कि पीछे कुआं आगे खाई, वो वाली चीज, कि आप आगे या पीछे नहीं जा सकते. सिमिलरली आपके पास डेडलॉक है. डेडलॉक बेसिकली इस तरीके का लॉक लग गया है ना, काइंड ऑफ अ डेडलॉक, है ना. सो यू कैन नॉट लाइक मूव फॉरवर्ड. ठीक है, ना ही आप पीछे आ सकते हैं. सिमिलरली यू हैव इम्पास. So impasse is also situation जहां पर जो व्यक्ति है, ठीक है, बेसिकली ही कैन नॉट मेक एनी स्टेप अहेड, राइट, ना ही बैकवर्ड. तो तीनों यहां पर आप क्या सकते हैं, स्टेलमेट, डेडलॉक एंड इम्पास. ये तीनों किससे रिलेटेड है, जहां पर आपका जो बेसिकली जो स्टेप्स है, यू कैन नॉट मेक एनी स्टेप्स, राइट, ना ही किसी भी कोई भी डायरेक्शन में, ना तो आगे ना पीछे. ठीक है. सो ऑल ऑफ दी अब यहां पर. नेक्स्ट. Okay, impasse is actually like a foreign expression user, है ना. Impasse that has come from French. You know that in English we have lots of words like derived from this foreign languages, है ना. So impasse has come from French. Okay, that's also pronounced as impasse, right? But in English we pronounce it as impasse. Okay. Then the pianist's detrimental performance captivated the audience, showcasing her exceptional talent and skill. The pianist आपका कौन होता है, जो पियानो आपको बजाता है. ठीक है. Detrimental performance, कैसी परफॉर्मेंस थी, detrimental थी. आपको अगर पता हो detrimental का तो आपको हंसी आएगी. क्यों? क्योंकि बहुत ही, ठीक है, गलत मीनिंग ये दे रहा है. Captivated the audience मतलब ऑडियंस का ध्यान की तरफ खींच लिया, और शो केसिंग हर एक्सेप्शनल टैलेंट की, बहुत ही अच्छा अपना टैलेंट दिखा रही थी, स्किल दिखा रही थी. ठीक है, ये यहां पर है. तो कैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए, देखो तारीफ हो रही है तो परफॉर्मेंस होना चाहिए पॉजिटिव. ठीक है. लेकिन डेट्रीमेंटल आपका क्या होता है, डेट्रीमेंटल मतलब समथिंग दैट इज डेंजरस. डेंजरस, डेट्रीमेंटल. सो दैट्स अ रॉन्ग वर्ड है. डेट्रीमेंटल यहां पर नहीं आना चाहिए. तो क्या आना चाहिए, so we have maestro, we have masterful, and then we have virtuoso, right? We have maestro, we have virtuoso, and then we have masterful. तो yes, क्या आना चाहिए फिर बताएं. देखिए we have maestro and we have then virtuoso. ये दोनों जो शब्द है ना, ये दोनों शब्द आपके क्या हैं, किससे रिलेटेड है, ये दोनों शब्द आपके रिलेटेड है एक परफॉर्मेंस से, बेहतरीन परफॉर्मेंस से. बट ये दोनों जो है आपके, दीज आर नाउन, और ये भी आपका क्या है, नाउन, राइट. मास्ट्रो एंड वर्चुओसो, यानी दोनों ऐसे व्यक्ति जो बेहतरीन है अपने काम में. ठीक है. या जिन्होंने बहुत अच्छा पीस ऑफ आर्ट, ठीक है, जिन्होंने किया है. बट यहां पर
नाउन, परफॉर्मेंस इज ऑलरेडी ए नाउन, राइट? और यहां पर आपको चाहिए क्या? एडजेक्टिव चाहिए। सो मास्टरफुल यानी बिल्कुल जिसमें आपकी मास्टरी है ना, दिस इज एन एडजेक्टिव, सो यू नीड एन एडजेक्टिव एक्चुअली, right? So masterful is an adjective. So the pianist's masterful performance captivated the audience. While master and virtuoso are people, right, who are excellent in their work. So इसका यहाँ पर आना चाहिए सर, एक मिनट भी नहीं है यहाँ पर। Okay, looks like I haven't put the option. ठीक है, यहाँ एक ही जगह बी होना चाहिए था, ठीक है? So only बी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन आज। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। Surge in food prices shows inflation far from ascendant, है ना? Surge मतलब क्या? Hike, या कह सकते हैं spike, है ना? In food prices shows inflation यानी महंगाई बेसिकली, far from आपका एक फ्रेज है जो बेसिकली मतलब होता है इसका something which is opposite as expected, है ना? Opposite to what was expected, right? And ascended का क्या मतलब है? बेसिकली ascension, है ना? Go up और rise, है ना? So surge in food prices, जो फूड प्राइसेस हैं, है ना, उसमें हाइक आ रहा है यानी वो बढ़ रहा है, तो ये शो करता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन शो करता है फार फ्रॉम व्हाट? फार फ्रॉम यानी किसके ये ऑपोजिट था, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन थी, बताएं? एसेंडेड यहां पर राइज नहीं आना चाहिए, राइज नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो क्या आना चाहिए? यूजर ने लिखा है इट शुड बी ओनली, दैट इज फार फ्रॉम कंट्रोल। बट कंट्रोल अगर है तो कर्टेल भी तो आ सकता था, बिकॉज कर्टेल मीन्स व्हाट? यू ब्रिंग लिमिट इनटू इट, है ना? कर्टेल मतलब रोकना, कंट्रोल करना, एंड सो इज टेम्ड। टेम्ड मतलब क्या? कर्टेल करना। सो कर्टेल मतलब व्हाट? टू लिमिट, एंड टू लिमिट मीन्स व्हाट? टू कंट्रोल, है ना? एंड सो इज टेम्ड। आप जब किसी को टेम करते हो, टेम का बेसिकली मतलब आपको पता होगा ना, ठीक है? जब आप किसी को कंट्रोल करते हो, रेगुलेट करते हो, फॉर एग्जांपल अ टेम लायन, ठीक है? सो टेम भी होता है कंट्रोल एंड लिमिट, तो तीनों यहां पर आ सकते हैं, राइट? कंट्रोल्ड, कर्टेल्ड एंड टेम्ड, यानी ऑल ऑफ द अबव। सो फार फ्रॉम, सो व्हाट वी आर एक्चुअली सेइंग इज कि फूड प्राइसेस में हाइक हुआ, ठीक है, सर्ज हुआ, जो महंगाई को दर्शाता है, जो बिल्कुल किससे विपरीत है? फार फ्रॉम कंट्रोल, है ना? जो इन्फ्लेशन है ना, बिल्कुल फार फ्रॉम कंट्रोल है, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि कंट्रोल होगी महंगाई, ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि वो कर्टेल होगी, यानी क्या होगी? लिमिटेड होगी, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि उसे टेम किया जाएगा, मतलब कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है, रेगुलेट उसे किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इट इज फार फ्रॉम मतलब दूर ही है उससे, ठीक है? तो यहां पर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ओके? All right. So, students, thank you so much for watching this live session, and thank you so much, user and all the students who joined this live session. So, we'll meet now tomorrow with other questions now here, okay, based on either fillers or sentence improvement, right? So, thank you so much. Take care and have a good night. Bye bye.